So then you've got it's insoluble in water, the solubility table. And say which one is insoluble? So quickly remember, all of them are chlorides. So chlorides ka solubility table, again, look at the data sheet. I wrote down the solubility table, and in that solubility table about chlorides over here, ठीक है, remember वो सारी बात chlorides की कर रहा है. So which chlorides are soluble? The chlorides that are soluble, एक second हमजा मैं भेज रहा हूँ link. All of them are soluble except for silver. The except for silver, silver plus one, ये वाला insoluble है. ठीक है, that's the one that is insoluble. एक second, नहीं वो हमजा इसका कोई link नहीं है, ये I just opened a PDF. ठीक है, working on it. I mean, it's, you can open the PDF yourself. It's May June 2020 5070 actually. ठीक है, O levels. So the next one is insoluble in water. We're done. Has a molecule which has only 18 protons. So I think it's going to be HCl, hydrogen chloride. Okay, what about protons? Chlorine has 17 protons, H has 1 proton. So what are the total number of protons? That's 18. So it's going to be HCl, the molecule with 18 protons. Is colored solid at room temperature. So kiske colored hote hain? Transition metals are the only ones that are colored. So that is going to be iron 3. Okay, this is the one that's going to be colored. Remember, transition metal compounds are the only ones that are. So they're the only ones that are colored. The compounds are colored. Zyadatar ke baki, the rest of them, they're mostly white or colorless. So we're done with the first part. Okay. अब मोल्स का क्वेश्चन आ गया. ये क्वेश्चन एक्चुअली हमने इस तरह का किया भी था. वो कह रहे कि a sample containing 1 mole of hydrogen gas is completely combusted and 286 kilojoules of energy is released. तो उसने बता दिया कि if you burn 1 mole of H2 like over here, so 1 mole of H2 produces how much energy? It produces 286 kilojoules of energy. So he's given us the ratio. तो वो कह रहा है कि अब बताओ कि अगर 25 grams hydrogen combust होगा, so what is the amount of heat energy that is produced? तो सबसे पहले what you have to do is you have to figure out कि ये जो 25 grams of hydrogen जो है इसमें कितने moles हैं? So moles would be mass divided by the mR of hydrogen, which is H2, which is 2. तो इसका मतलब है it has 12.5 moles. तो आप रेशियो लगा लो कि 1 मोल का पता है कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो 12.5 मोल्स का पता लगा लो कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी. That's going to be unknown. X cross multiply karo, X would come out to be 286 times 12.5. So what do you get over here in this case? 3575. Which one? You get 3575. So 3575 kilojoules. Okay, is this clear? Okay, 1 mole Yes, sure. 1 mole he already told you. So 12.25 grams is 12.5 moles. So uska nikal lo ratio laga ke. I said then use ideas about bond breaking and bond forming to explain why this reaction is exothermic. So remember, okay, whenever there's a reaction, ठीक है, जैसा H2 or O2, the first thing is the molecules have to collide and the old bonds have to be broken. So energy is needed first to break old bonds. And then once those bonds are broken, yani is case mein, you would have to break the HH bond and you have to break the O double bond. Okay, so you would have to break the double bonds, okay, or the single bonds. And once that happens, new bonds are going to be formed. The H atom toot gaya, O atom toot gaya, they would start and they would join up. So whenever there's a reaction, energy is needed to break old bonds. And then energy is released to form new bonds.
Now the question is, why is the reaction exothermic? The reaction is going to be exothermic. Why? Because less energy would be needed to break old bonds and more energy would be released to form the new bonds. So which is why overall the reaction would be exothermic. मतलब for example आपको पुराने bonds तोड़ना बहुत आसान था. That just required 50 kilojoules of energy, just as an example. ठीक है. और फिर जब नए bonds बने वो इतने strong थे कि they released a lot of energy. Let's say minus 500 kilojoules of energy was released. ठीक है, रिलीज होती है तो that's negative sign, add होती है मतलब gain होती है तो plus sign होता है. ठीक है, तो that indicates कि overall क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है पुराने बॉन्ड्स तोड़ने में और फिर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है. ठीक है, that is exactly what happens when you try to burn wood. कि शुरू में बॉन्ड्स तोड़ने होते हैं तो आप उसके नीचे थोड़ी सी आग लगाते हो, फिर जब नए बॉन्ड्स बनते हैं तो वो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो which is why the overall reaction would be exothermic. Is this clear? Yes. ठीक है, बाकियों को क्लियर है? हमजा, is this clear? बस ना. Sir, have we done heat earlier? हाँ, वही मैं इधर करा रहा हूँ. ठीक है, and we can quickly do that कि when you talk about enthalpy changes, कहाँ पे कराऊँ, एक सेकेंड बोर्ड खोल. ठीक है, उसके अंदर माइरो अच्छा, just one second, इसको साइड पे करें. अच्छा, remember enthalpy change, पहले तो वो याद रखना है कि enthalpy change is the overall energy change of a reaction. ठीक है, it's negative, that means exo. Positive, that means endothermic, that means it's gaining energy. But reactions usually have both things going on. For example, you have an H2 molecule, you've got a Cl2 molecule, and if they were to react, they're going to form two HCl molecules. Now, to form these HCl molecules, the thing is they would have to collide and the old bonds need to be broken. ठीक है, तो उनको एनर्जी देनी पड़ेगी. They would have to collide with each other with sufficient force. बहुत energetic collision होगी तब जाके उनके bonds टूटेंगे. So there's some minimum activation energy that is required. So the first step is you need energy. So you need energy to break old bonds. The next step is कि जब वो bonds टूट गए ना, ठीक है, let's say there was a collision and अब उस collision के अंदर there was this big collision और H के atom टूट गए हैं, Cl के atom सारे टूट गए हैं. ठीक है, they're all flying around. ठीक है, तो अब नए bonds बन सकते हैं. तो energy would be released when new bonds are formed. So energy is going to be released to form new bonds. So the first part is endothermic, that would be positive. The second part is negative. तो अब होगा ये कि अगर पहला पार्ट ज्यादा है, इट्स मोर, यानी वो बॉन्ड इतने पक्के थे ना कि इतने स्ट्रॉन्ग थे कि इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक देम. और फिर जो नए बॉन्ड्स बने ना, एनर्जी बड़ी कम रिलीज भी है. तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, दैट्स गोइंग टू बी एंडोथर्मिक, दैट्स गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव साइन कि मतलब उसको एनर्जी चाहिए ही है क्योंकि बॉन्ड्स तोड़ने में इतनी ज्यादा एनर्जी लग रही है और बहुत कम एनर्जी रिलीज हो रही है बॉन्ड्स फॉर्म होने में. इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, so that's the first part.
अच्छा अब और वाइस वर्सा ऑपोजिट, ठीक है, द ऑपोजिट एक्सप्लेनेशन इज कि मे बी द बॉन्ड्स, द ओल्ड बॉन्ड्स आर रियली वीक। जैसे हम पेपर को आप जलाते हैं ना, उसको आपको इतनी एनर्जी देनी नहीं पड़ती, ठीक है, तो दैट मीन्स द ओल्ड बॉन्ड्स आर काइंड ऑफ रियली रियली वीक, ठीक है, तो लेस energy is needed to break those bonds and more energy is released when they're forming bonds, ठीक है, so that's also a situation. So in that case the overall reaction would be exothermic. ये clear है Hamza, Vasna, is this clear? Is this clear, yes or no? जी सर। अच्छा अब उसमें ना the same thing could be shown in a graph. So there's a graph के let's say ये energy का axis है, नहीं हमजा ये देख लो ना कि पुराने बॉन्ड्स तोड़ने हैं, ठीक है, if a lot of energy is consumed for it, मतलब in this case it's going to be overall it's going to be what रिलीज ज्यादा हो रही है ना, तो ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी नेगेटिव, ठीक है, दिस वन ओवरऑल would be negative अच्छा, exothermic, it's the opposite is then it's going to be endothermic. अगर यहाँ पे okay. एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती टू ब्रेक ओल्ड बॉन्ड्स और रिलीज बहुत कम हो Less is रही, released. तो दैट Okay, मींस sir. देन इट्स गोइंग टू बी endothermic, ठीक है, एंड इट्स गोइंग टू कम Okay, sir. आउट पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है बिनाल। अच्छा तो ये जो एक्सिस है ना, दिस इज द एनर्जी एक्सिस, सो द अदर वन इज के you can show this over here, okay, you've got reactants and they're turning into products. तो इसमें ना शुरू में एनर्जी चाहिए बॉन्ड्स तोड़ने के लिए, तो एनर्जी ज्यादा हो रही है, ठीक है, you're breaking bonds, you need energy and then energy is released when new bonds are formed. तो पहले आप बॉन्ड्स तोड़ोगे, पुराने बॉन्ड्स तोड़ोगे, ठीक है, and then new bonds are going to be formed. So in that case it's going to turn out to be overall it's going to turn out to be exothermic, ठीक है, is this clear कि ये रिएक्शन जो है ना ओवरऑल इसमें एनर्जी का कंटेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एक्सोथर्मिक एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड, मोर ऑफ इट इज रिलीज्ड जब बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं एंड लेस इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड, इज दिस क्लियर? यस सर। अच्छा तो यूजुअली ग्राफ ये होता है, दिस इज अ ग्राफ फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक क्योंकि एनर्जी रिलीज ज्यादा हो रही है, डेल्टा एच इसको कहते हैं, डेल्टा एच इज द ओवरऑल एनर्जी चेंज की यहां से ना रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट तक क्या डिफरेंस था, और एक्टिवेशन एनर्जी इसको कहते हैं कि रिएक्टेंट से ना वो जो ऊपर जाना था शुरू में जो एनर्जी चाहिए थी, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। जैसा पेपर को आग लगाना है ना, तो शुरू में आपको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, यू हैव टू पुट अ लाइटर इन, वो माचिस जला के ना उसके नीचे आपको रखना पड़ता है, ठीक है, सो यू हैव टू गिव इट एनर्जी सो दैट द ओल्ड बॉन्ड्स ऑफ द पेपर ब्रेक एंड देन न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो that is known as the activation energy or the minimum energy that is needed to start a reaction. और एक इसका opposite graph होता है, ठीक है, the opposite graph looks like this, which is for an endothermic reaction. So it's going to look like this के ये reactants होंगे और products होंगे ना वो थोड़े ऊपर होंगे और इस तरह का ग्राफ होगा, ये एनर्जी का एक्सेस है and this is for an endothermic reaction. अब इसमें क्या हुआ है कि ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, पुराने बॉन्ड्स तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगी है और फिर जब नए बॉन्ड्स बने ना तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हुई, तो दैट मींस द ओवरऑल रिएक्शन नाउ इज एंडोथर्मिक, कि वो एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है, रिलीज बहुत ही कम कर रहा है, और उस केस में द एंथैल्पी चेंज इज गोइंग टू बी दिस वन, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो ओवरऑल डिफरेंस है ना, दैट इज एंथैल्पी चेंज, और एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो शुरू में आपको इतनी एनर्जी चाहिए थी रिएक्शन के लिए, इज दिस क्लियर? ठीक है, ये दोनों ग्राफ, और बाकी आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर कि
जब कैटलिस्ट डालते हो ना तो व्हाट हैपेंस इज कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, कि पुराने बॉन्ड्स तोड़ना आसान हो जाता है, तो शुरू में आपको इतनी एनर्जी चाहिए नहीं होती, तो वो हाइट जो होती है ना ग्राफ की वो थोड़ी कम हो जाती है। तो कैटलिस्ट का काम ये होता है कि कैटलिस्ट समहाउ मेक्स इट इजियर फॉर द रिएक्शन टू हैपन, क्योंकि रिएक्शन में मसला क्या था, रिएक्शन में मसला था कि पुराने बॉन्ड्स नहीं टूट रहे थे। ठीक है, जिस तरह ऑक्सीजन गैस हवा में है, वो क्यों नहीं रिएक्ट करती, मतलब पेपर भी सामने पड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पहले पुराने बॉन्ड्स तोड़ने हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स को आपको एनर्जेटिक बनाना है ताकि वो एक दूसरे को जाके ना जोर जोर से वो हिट करें ताकि पुराने बॉन्ड्स टूटे। ठीक है, तो इसलिए वो आप आग लगाते हो, मॉलिक्यूल्स को हीट अप करते हो ताकि उनकी आपस में ना कोलिजन्स जो है ना वो ज्यादा विगरस हो, इफेक्टिव हो, ताकि ओल्ड बॉन्ड्स टूटे। ठीक है, इसी तरह जैसे आप माचिस जलाते हो तो आप माचिस को स्ट्राइक क्यों करते हो इतने जोर से उसके साथ, ठीक है, यू हैव टू स्ट्राइक इट ताकि पुराने बॉन्ड्स टूटे, फिर जाके नए बॉन्ड्स बनेंगे ना, तो वो फिर हवा में जो ऑक्सीजन होती है वो उसके साथ वो रिएक्ट करती है और इट स्टार्ट्स बर्निंग अप। हाँ हमजा वही है। ठीक है, और ये नेट डिफरेंस है, ये हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक होगा। एरो की डायरेक्शन याद रखना, इट्स ऑलवेज द नेट डिफरेंस, कि यू स्टार्टेड एट दिस पॉइंट, बीच में क्या हुआ यू डोंट केयर, एंड कहां पे हुआ यहाँ पे, तो इट्स द नेट एनर्जी चेंज। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक, अगर रिएक्टेंट नीचे है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक इधर वो एनर्जी गेन हो रही है और इधर एनर्जी लूज हो रही है। ठीक है, दिस वन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, दिस वन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज मोर एनर्जी इज टेकन इन एंड लेस एनर्जी इज गिवन आउट। हमजा इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो वापस उस पे आ जाते हैं क्वेश्चन में। अच्छा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के बारे में एक तो जल्दी पता होना चाहिए कि इट्स अ फ्यूल सेल दैट इज, वो क्या कहते हैं, रिन्यूएबल होता है, renewable and no harmful products. Water is the only byproduct of this fuel cell. इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जो होता है it turns into H+ ions and loses 2 electrons, और फिर ऑक्सीजन जो है वो turns into 4OH- ions. ठीक है, पूरा जो रिएक्शन है ना वो सिंपल ये है, अगर मैं एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को सम अप करूं, इट्स अ फ्यूल सेल जिसके अंदर there's going to be an electrolyte. Electrolyte is a bunch of ions. अब वो डाइल्यूट एसिड भी हो सकता है, डाइल्यूट एल्कली भी हो सकती है। ठीक है, और एल्कली, एंड इट्स गॉट 2 इलेक्ट्रोड्स इन इट, एक साइड पे ऑक्सीजन गैस आ रही होगी और एक साइड से ना हाइड्रोजन गैस इज बीइंग pumped in, and it's going to have a wire, an electrode that is going to be inserted into it, और बाहर ना ये let's say किसी बल्ब के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन उसने शो किया हुआ है कि ऑक्सीजन जो है ना इट वुड स्टार्ट कंज्यूमिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोड्यूस 4OH, तो वो इलेक्ट्रॉन्स ना गेन करना शुरू कर देगी। ठीक है, मतलब इक्वेशन देखो, रिएक्शन देखो, ऑक्सीजन जो है इट स्टार्ट्स टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्सीजन कम्स इन, ये जो वायर है ना इससे वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करना शुरू कर देती है। अच्छा, दूसरी साइड पे क्या होता है, हाइड्रोजन जाता है और वो उल्टा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो बाहर वाली वायर में ना देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ करंट। नाउ ऑक्सीजन आया, इट स्टार्टेड गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो वो वायर में से इलेक्ट्रॉन्स पुल करना शुरू कर दिए उसने। हाइड्रोजन आया, इट स्टार्टेड लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, उसने इलेक्ट्रॉन्स देने शुरू कर दिए, तो बाहर जो वायर है ना देयर इज अ करंट फ्लोइंग नाउ। So that's what your fuel cell is. That's it. Okay, that's about it. You just have to remember these 2 equations and you have to remember it's working. That's it. कि इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये कि कोई harmful products नहीं produce होते, water is the only byproduct in this case, और इसका दूसरा फायदा है कि so water is the only byproduct that's going to be produced. इसका मैं वो कर लेता हूँ कि ये मैंने गलत लिखा हुआ है, नहीं एक्चुअली ठीक है, फॉर नहीं ये गलत है, 2H2O होगा ये, सॉरी। ठीक है, दिस इज व्हाट्स गोइंग टू गेट प्रोड्यूस्ड, ये इक्वेशन इस तरह याद कर लो। सो द पॉइंट इज
कि दैट्स योर फ्यूल सेल, बाकी फ्यूल्स के मुकाबले में ज्यादा बेहतर इसलिए कि हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं और रिन्यूएबल है। ऑक्सीजन गैस हवा में होती है, तो और हाइड्रोजन गैस भी आपको वाटर से मिल जाता है, तो ये रिन्यूएबल है। दे नॉट गोइंग टू 70% ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट इज वाटर, ठीक है, तो ये कभी खत्म नहीं होंगे, तो दैट्स अ गुड थिंग, अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स दैट विल रन आउट ऑफ। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है, कि एक जगह पे रिएक्शन हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करता है, और दूसरी जगह पे रिएक्शन होता है वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर released or produced. So there's a constant flow of production of electrons on one side, a constant consumption of electrons on the other side. तो इसकी वजह से एक पूरी साइकिल फ्लो करती रहती है and current flows. Is this clear? Vasna or Hamza, is this clear? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, फिर ये हाइड्रोकार्बन्स का आ गया, उसने क्या स्टेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिथाइल पेंटेनोएट, इसकी सारों को एड अप करो और बता दो कि क्या है। Predict the boiling point of methyl pentanoate. तो boiling point उससे दिए में एक ट्रेंड चल रहा है 32, 57, 80, 102, तो 20 का approximately फर्क पड़ रहा है। Let's say 22 का फर्क पड़ रहा है, तो अगला वाला क्या होगा? That would be, let's make it 125, ठीक है, तो just follow the trend. अच्छा, फिर वो कह रहा है कि why is it not possible to predict the melting point? Melting point क्यों नहीं predict कर सकते इसका? क्योंकि melting point में there is no trend, वो पहले decrease हो रहा है फिर दोबारा इंक्रीज हो रहा है, तो अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे वो डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा। यहाँ पे तो एक क्लियर ट्रेंड है कि 2020 के फर्क से ना 30 से 57, 23 आई थिंक, दिस इज 23, 22, इधर आगे 23 मैंने फिर कर दिया, सो देयर इज अ ट्रेंड, तो इधर देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रेंड, तो हमें क्या पता कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इज दिस क्लियर एज वेल? ये क्लियर है? जी सर। Yes, sir. अच्छा, फिर एक्सप्लेन हाउ द डेटा इन द टेबल शोज दिस। वो कह रहा है 35 सेंटीग्रेड पे इट्स अ गैस, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 35 से कम होगा ना। मिथाइल किसका वो कह रहा था? पेंटेनोएट का, पता नहीं कौन सा था, किसकी बात कर रहा था, मिथाइल मेथनोएट, तो वो कह रहा है 35 पे वो गैस है। तो रिमेंबर दिस कि जो सब्सटेंस की स्टेट होती है ना, उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में वो सब्सटेंस जो होता है ना, दैट्स अ लिक्विड। उससे ज्यादा जो भी टेम्परेचर होगा ना, इट्स गोइंग टू बी अ गैस, उससे कम जो टेम्परेचर होगा ना, इट्स गोइंग टू बी अ सॉलिड। तो जैसा वाटर होता है, वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ना, इट्स अ लिक्विड। 100 से ऊपर वो गैस होता है और 0 से कम वो सॉलिड होता है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को इस तरह स्टेट्स फिगर आउट करनी है, तो वो 35 कह रहा था, 35 इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस थिंग। तो एक्सप्लेन, तो आपने कहा था 35 डिग्री सेंटीग्रेड इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, ऑफ ये जो भी है मिथाइल मेथनोएट, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 32 है। फिर दीज आर एस्टर्स, एस्टर्स का फायदा ये होता है कि इट्स यूज इन परफ्यूम्स, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस्टर्स आर कंपाउंड्स आर यूज्ड ऑफन इन परफ्यूम्स। अगला जो काम है वो है कि द फॉरवर्ड एस्टर्स वगैरह पढ़े हुए उसने, वसना, हमजा, आर यू डन विद एस्टर्स? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो जस्ट रिमेंबर कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता था कि इफ यू पिक एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसकी अगर मैं रिवीजन करूँ ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज दिस थिंग कि उसमें डबल बॉन्ड O और OH होता है, एंड यू हैड अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल उठा लो, ब्यूटेनॉल उठा लेते हैं, और ये बाकी सारे H हैं, ठीक है, तो इसका OH जाता था और इसका H जाता था, ये दोनों बीच में से निकल जाते थे, वाटर बनता था, और वाटर बनता था और ये दोनों आपस में जुड़ जाते थे, और एस्टर लिंक किसे कहते थे? सीरियल बॉन्ड ON, ओ दैट वाज योर एस्टर लिंक। अच्छा, ये वाला करना है मोल्स का क्वेश्चन, उसने कहा कि मैक्सिमम मास बताओ इसकी,
जो 11 ग्राम्स प्रोपेनोइक एसिड से मिलेगा, तो मोल्स निकालो इसके, कितने मोल्स हैं? 11 ग्राम्स, मोल्स क्या होता है? 11 डिवाइड बाय एमआर, एमआर क्या होगी इसकी? ये 45 होता है, प्लस 14 कितना हो गया? 59 प्लस 15 74। ये चेक कर लो 74 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कितने मोल्स बने ये? 0.148. 149, ठीक है। तो 0.149 मोल्स, तो 1:1 है, तो इसके मोल्स कितने होंगे? इसके मोल्स एग्जैक्टली 0.149 मोल्स होंगे। तो अब इसकी मास से निकाल लो, मास क्या होगी? अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय द एमआर, which is 15 plus 15 30 हो गया। 30 plus 14 44, और 44 और मतलब जो भी एमआर बन रही है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, मास आ जाएगी। ये कोई कैलकुलेट कर ले क्या होगा? 15 12 plus 3 15 and 30 plus 14 that's 44 56 और 88 बन रहा है मेरे ख्याल से। The MR is 88, so I'm going to multiply this thing by 88. I get 13.08 grams, या इसको 3 significant figure तक 13.1 gram लिख सकते हैं। That's the mass I'm getting. Is this clear? This one? जी सर। जी सर। एक सेकंड हमजा, मैं देख लेता हूँ एक क्वेश्चन। हमजा क्वेश्चन, अच्छा यील्ड वाला हमजा, this one? Yes, sir. This one, right? Yes, sir. इसको बस इधर ही कर लेते हैं कि अच्छा, I've got, he's saying कि अच्छा मीथेन के मोल्स दिए मैं, ठीक है। रिमेंबर कि इस केस में ना 100 cm3, और वो कह रहे हैं हाइड्रोजन गैस कितनी बनेगी। तो व्हाट्स द रेशियो? इट्स 1:3, राइट? इट्स 1:3। तो रिमेंबर इसमें जब गैसेस हो ना तो उसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 100 cm3 अकॉर्डिंग टू द रेशियो वुड गिव यू हाउ मच? 300 cm3। हमजा, इज दिस क्लियर? So, sir, for even volume, we can do the ratio. I thought it's only but for moles. That's why I did. नहीं, that's, but the shortcut is only if you've got two gases. That's the only. Okay. Then you can directly use ratios. No need to find moles. Okay. But Okay. it's only if you're comparing gases, their volume ratio and mole ratio would be exactly the same. Achha, Okay. so you found three. I mean, you can find moles as well, and you can do that way as well. But you're going to get the same thing. Achha, you got the volume, right? 300 cm3. I mean, that's the theoretical one. What does yield mean? 70%. Yield means that you're not going to get this. You're going to get 70% of this. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. So Right. just that is what yield is. So 70% of this is, I think, 210. I mean, you can try and find that out. ठीक है? Clear? Yes, sir. It's 210. So ठीक है. उस पे आ जाते हैं, एक सेकेंड। अभी क्यूबियम का क्वेश्चन आ गया, अभी हमने किया था। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, कौन सा रिएक्शन फेवर होगा? इट्स गोइंग टू बी एंडोथर्मिक, राइट?
जी सर। तो उससे क्या है, अच्छा नहीं सॉरी, ये इक्विलिब्रियम का नहीं है, रेट का है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो व्हाट वुड हैपन, दे विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, तो द रिएक्शन वुड बी फास्टर। व्हाई वुड इट बी फास्ट, रिमेंबर रेट का क्वेश्चन है, ठीक है। The reaction would be faster, and if it's faster, so you get more frequent collisions, and you also get more effective collisions as well. ठीक है, ये दोनों होंगे। अब वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम क्या है, पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। अब वो कह रहा है कि टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तो कौन सा रिएक्शन फेवर होगा, ये वाला पार्ट इक्विलिब्रियम का एंडोथर्मिक, ठीक है। तो अब जाके देखो कि एंडोथर्मिक कौन सा वाला है, वो बेसिकली देखना है। इसको पता नहीं क्या हो गया, 1 सेकेंड। अच्छा, तो एंडोथर्मिक देखना है, विच वन इज एंडोथर्मिक। तो उसे क्या, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो फॉरवर्ड जो है वो तो एक्सो उसने कह दिया, तो एंडो कौन सा होगा, बैकवर्ड। तो इसका मतलब है एंडो बैकवर्ड है, ठीक है। तो एंडो इज फेवर्ड, विच वुड बी बैकवर्ड। तो पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा, बैकवर्ड को फेवर करेगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? जी सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं इसको। कल कोशिश करते हैं 1 PM पे, ठीक है। वील हैव अ पास पेपर क्लास ओनली, ठीक है। ओके एवरीवन, टेक केयर। Allah Hafiz, sir. फिर